Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am yours, Sir Ghulam Murtaza Sheikh. Welcome to my channel, Learner's Light. Today I am going to cover the exercise number 5 based on question answers of chapter 2, Once More to the Lake. Question number 1. Why does writer take a vacation at this particular lake? The writer takes a vacation at this particular lake because he wants to avoid the worries of his life. The peacefulness of a lake provides him comfort and quietness. That's why he prefers to visit this natural lake and beautiful lake particularly. Question number 2. Which key concern the writer has expressed in the text? The following key concern the writer has expressed in the text: never forget your past precious moments. Where there's nature, there's peace. Influence of flashback. Beautiful bond between father and son. Advancement of technology, past and present. Death is permanent. Life changes with its time. Question number 3. How has the lake changed since he was a boy? In the past days, when E.B. White was a boy, the boats were powered by inboard motors, but now the all-campus are outboards. In the old days, the girls were same-farm girls, but at present their hair had been washed. In past days, his family arrived at the town of Belgrade by railway. Now the road of the lake has been tarred, pitched, and the cars have replaced the railway system. Question number 4. What contrast does the writer make between the sea and the lake? By making the difference between the sea and the lake, author said that exactly the lake was there where he had left it. It looks like an enchanted sea, and definitely it was the constant and trustworthy body of water which never moves. Question number 5. Why does writer repeatedly call the lake as the wild lake? The writer again and again refers to lake as a wild lake because the lake was situated in the midst of jungle and quite heavily wooded. Question number 6. Why is arriving the lake less exciting now than in the past? On arriving at the lake, now the only thing that was less exciting than the past was unfamiliar and nervous sound of the outboard motors, which even in the hot mornings were making petulant sound. Question number 7. How are the motors different in the present situation? In the past days, all the motors were inboard, and when they were a little distance, the noise they made was sedative and ingredient of summer sleep. But now all the motors were outboard. They were making a disquieting and irritating sound, which was a sign of disquieting and discomforting. Question number 8. The writer calls the lake as a holy spot. How does he further develop this idea? The writer calls the lake as a holy place because the nearness of this natural lake and its eye-catching view make him realize the closeness of the piety, because it is said that where there is nature, there is peace and holiness. Question number 9. What kind of a sensation persisted and grew in the mind of a writer? On returning at the lake, the writer's childhood sensation grew, and he felt himself as a father, and he was so relieved by existing in old memories. Question number 10. What is the central idea of the text? Written by E.B. White, Once More to the Lake is an essay that reflects upon White's memories of visiting the lake as a child and the creates with his son many years later. White describes experiencing a sense of childlike and his father at the same time. Okay, students. Unit 2.4, exercise number 1 of section grammar, use of semicolon. You probably have used semicolon in your write-up work. Let's learn its properly used in the sentences. Rule number 1. To join two related complete thoughts without using conjunction. Semicolon टू रिलेटेड थॉट्स को मिलाती है आपस में, कंजक्शन का बिगर यूज़ किए गए. एग्जाम्पल देखेंगे. द स्टॉर्म बिगन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लीविंग. मलिहा वाज ग्लैड टू शी हर टेकन हर अम्ब्रेला विद हर टू द स्कूल. यहाँ पे ये देखें सेमीकोलन ये इस्तेमाल किया गया है, दो एसोसिएटेड थॉट्स को आपस में मिला रही है. टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस विद द यूज़ ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब. कंजक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल करते हुए सेमीकोलन दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाती है. द स्टॉर्म बिगन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लीविंग. कंसिक्वेंटली क्या है, ये कंजक्टिव एडवर्ब है. यहाँ पे ये देखें कंजक्टिव एडवर्ब, उससे पहले ये सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है. मलिहा वाज ग्लैड शी हैड टेकन हर अम्ब्रेला विद हर टू द स्कूल. ये दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं, आपस में कंजक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल किए गए सेमीकोलन यहाँ पे ज्वाइन कर रही है. ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1 को हल करेंगे. वर्क इन पेयर्स एंड इंसर्ट सेमीकोलंस एज नीडेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस में ज़रूरत के मुताबिक सेमीकोलन को इंसर्ट करें. नंबर 1. ऑल द शॉप्स इन आवर एरियाज यूज टू बैड
used to be closed during the lockdown, now they are open already। यहाँ पे लॉकडाउन के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, क्योंकि ये दो एसोसिएटेड थॉट हैं। द गवर्नमेंट हैज़ वाइप्ड आउट ऑल इंक्रोचमेंट्स, consequently the roads outside the shopping malls have become wider। यहाँ पे ये देखें, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सेमीकोलन का इस्तेमाल है। consequently कंजक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है। because there was heavy fog in the morning, the services at the airport were closed। according to rule number 1 सेमीकोलन दो एसोसिएटेड थॉट को मिला रही है। बाबर was not excited about his 17th birthday सेमीकोलन, however his spirits improved when he opened his presents। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सेमीकोलन however ये एडजेक्टिव कंजक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है और दो इंडिपेंडेंट क्लास को सेमीकोलन आपस में मिला रही है। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2 यूनिट 2.4 ग्रामर सेक्शन। नीचे दिए गए पैराग्राफ में सेमीकोलन का करेक्ट इस्तेमाल करना है। मैंने इस एक्सरसाइज को हल किया गया है। ये जो ग्रीन शेडेड है यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा, यहाँ वर्किंग के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा, और सेकंड नंबर पे पार्ट के बाद ये देखें सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद रूम्स के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद मस्ट के बाद, और लास्ट पैराग्राफ में कंटेक्स्ट के बाद। यहाँ पे ये सेमीकोलन जो है ना एरर्स थी उसको मैंने फिक्स किया हुआ है। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 3 सेक्शन ग्रामर यूनिट 2.4। अकॉर्डिंग टू रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब मिस्टेक्स दी गई हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है। ये पहला जो वर्ड दिया गया है ये एरर है, और उसके साथ जो मैंने करेक्ट वर्ड दिया हुआ ये उसका रिप्लेसमेंट करेक्शन है। बिकम इस्तेमाल किया गया जबकि बिकेम होगा। थिंक्ड गलत है, थॉट होगा। बिल्डेड गलत है, बिल्ट होगा। लाफ गलत है, यहाँ पे लॉफ्ट का सेकंड फॉर्म होगा जबकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। सा का साठ गलत है, सा होगा। वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड होगा। बिल्डेड गलत है, बिल्ट होगा। पुटेड गलत है, पुट होगा। ड्राइव्ड गलत है, उसका सेकंड फॉर्म करेक्ट ड्रोव से होगा। लाइट गलत है, लिट सेकंड फॉर्म से होगा। फेल्ड गलत है, फेल होगा। ग्रोड ग्रो गलत है, ग्रू होगा। मैक्ड मेक का गलत से V2 है तो मेड होगा। उसके बाद बिकम सेकंड फॉर्म गलत है, बिकेम होगा। टुक टेक का टैग्ड किया गया जबकि सेकंड फॉर्म है टुक। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4 नीचे दिए गए पैराग्राफ में ब्रैकेट्स में फॉर्म ऑफ वर्ब की एरर्स हैं उसको सेटल करना है, करेक्ट करना है। आप देखेंगे पहले नंबर ब्रैकेट पे आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे कि उसमें ब्रैकेट में दिया गया वर्ब एप्रिशिएट है, उसको एप्रिशिएटेड करना होगा। उसके बाद इज़ लगाना होगा। सेकंड नंबर ब्रैकेट में इज़ सही होगा, और थर्ड पे प्रोड्यूस्ड, फोर्थ पे मैन्युफैक्चर्ड और फोर्थ पे कंप्लीट्स होगा, और सिक्स्थ पे क्वाइल्ड होगा, और उसके बाद सेवन्थ पे रैप्ड, एट पे सोक्ड, और उसके बाद डन करेक्ट होगा। प्रोटेक्ट्स करेक्ट होगा। डिप्स होगा। इज़ होगा। उसके बाद यूज्ड, और उसके बाद फैसिलिटेट्स। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। चैप्टर वंस मोर टू द लेक कंप्लीट हो गया। उसके ग्रामर का सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया, और उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो ग्रामर का सेक्शन है, एक्सरसाइज का सेक्शन है, वो भी हमने हल किया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लर्नर्स लाइट को सब्सक्राइब करें, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।